Thank you so much. So yeah. सो अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में हमने जो देखा था कि उसमें सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पे भी स्विच फ्रॉम वन इंस्ट्रक्शन टू अनदर इंस्ट्रक्शन विद द हेल्प ऑफ जंप इंस्ट्रक्शन. इसके बाद स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में we introduce the concept of PC which is called as a program counter which makes sure कि हमारा प्रोग्राम जो है लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है. Then we came to the third programming methodology, which is called as a procedure-oriented programming, where a concept of procedure was introduced. So procedure is nothing but it is a collection of interrelated instructions. Procedure can also be called as a function. Procedure can also be called as method. So in Java, we generally call them as a method. So आज जो हम discuss करेंगे, that is all related to polymorphism on the method. Okay, so ये क्या है देखते हैं, but we'll just go forward. थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी के ऊपर. Okay, procedure oriented programming में we call it as a in Java we call it as a method. Then इस मेथड का एडवांटेज क्या मिलता है? What is the advantage of this method is whenever you require a method to be executed, you just need to call that method instead of writing the whole functionality again and again. You better make a method out of it. आप एक मेथड बना लो और जब भी आपको उस मेथड का रिक्वायरमेंट है आपको सिर्फ क्या करना है, by creating an object of that particular class you can access those method whenever you want to. Okay, so that is the advantage that you get out of the method. So basically it helps you to perform or to achieve code reusability. So what is code reusability? You just need to write once on finishing or on writing down the code once. You can use it as many times as you require it. Okay, so that is a major advantage that you get in uh, procedure oriented programming, which is third type of programming methodology. नेक्स्ट वी हैव द मॉड्यूलर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. मॉड्यूलर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो प्रोसीजर जो एक दूसरे से रिलेटेड है we combine them to form a module, or we can call it as a package. So you might have heard about the different packages that we have, such as the math package. The lang package. Lang package has the different classes defined into it. जिसके अंदर math करके class भी है, जिसके अंदर system class करके भी है. So there are numerous classes which has been defined in the lang class. Then we have a class. Then we have a package which is called as a util package. जिसमें हमने से scanner class use किया है अब तक. Okay, so there are different types of uh, packages which was introduced or preprocessor directory जैसे आप C में use करते हो. So these are the different packages which holds the interrelated functionality. So जब भी अगर आपको कोई भी functionality use करना है, you just need to import these packages and you can use them wherever you want to. Okay, so that is the advantage that you get out of the modular oriented programming. Then the last concept, the last programming methodology, or the current programming methodology that we are studying is called as a object-oriented programming methodology. Okay, so object-oriented programming methodology जो introduce कराया गया, उसका एक ही मकसद था कि कोई भी real world का अगर हमें कोई भी entity का अगर एक object एक program लिखना होगा और या उसको simulate करना होगा अपने real world के अंदर, so वो simulate करने के लिए जो programming methodology use की जाती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी, उसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी कहते हैं. सो व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? अगर मेरे पास कोई भी रियल वर्ल्ड का एक ऑब्जेक्ट है, ओके, सो फॉर एग्जांपल स्टूडेंट करके एक ऑब्जेक्ट है. ओके, सो ये स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को अगर मेरे को कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट करना होगा, अगर मुझे इसके ऊपर प्रोग्राम लिखना होगा, तो मैं क्या करूंगा? आई जस्ट नीड टू पहले तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा क्या ये स्टूडेंट एंटिटी है. कैन अ स्टूडेंट बी कंसिडर्ड एज एन एंटिटी? कैन इट बी कंसिडर्ड एज एन एंटिटी? Yes. Yeah, so it will have some attribute, right? It will have some properties. So what are the properties of the student? So student has student ID, yeah, roll number. उसके अलावा student can have name. Okay, so these are some of the properties. Student can have address. Okay, so these are the properties that student will have. Okay, इसके अलावा it will also have some behavior. Behavior मतलब student जो है वो कुछ role करेगा. It will perform some task. Okay, so student can basically डिस्प्ले ऑल द इंफॉर्मेशन, यानी जो भी इसका इंफॉर्मेशन है वो अगर आप चाहो तो डिस्प्ले करा सकते हो. ओके, अगर आप चाहो तो वो एग्जाम दे सकता है. ओके, एग्जाम, इट कैन गिव एग्जाम. ओके, या तो ये सारी डिटेल है जो आप करा सकते हो. सो अगर इसके लिए मैं आपको बोलूँ कि प्लीज राइट डाउन द प्रोग्राम फॉर
to get the input from the user और या स्टूडेंट का डिटेल रिकॉर्ड रखने के लिए अगर आप एक प्रोग्राम लिखो, या इसको अगर मैं कंप्यूटर के अंदर इफ आई वांट टू सिमुलेट दिस होल रियल वर्ल्ड एंटिटी इनटू अ कंप्यूटर, अगर मुझको इसको कंप्यूटर के अंदर डालना होगा तो मैं क्या करूंगा, इसके लिए आई हैव टू राइट डाउन अ प्रोग्राम एंड दैट प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी दैट आई विल बी यूजिंग बिकॉज इट इज अ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट आई हैव टू यूज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मुझे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लिखना पड़ेगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं रियल वर्ल्ड में इसको ट्रांसलेट करूंगा सो ये जो स्टूडेंट है दैट वी हैव रिटन ओवर हियर दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ क्लास। सो मैं क्या करूंगा, क्लास स्टूडेंट बना दूंगा यहाँ पे। ओके, so class student, so this has become my class. In this class I'll be writing down the different variables. So variable जो है that would become my properties. Okay, so that variable can be declared as property. So I can have int roll number or int student roll number. So that would become my properties. Okay, so that this is how we declare the properties. Then we can have int name. Okay, then we have sorry, not int name, int name, it is string name. Then we can have string address. Okay, display अगर आपको एक method use करना है तो you can call it as a void display. You can declare as a void display as the method. Method are generally represented with the help of parentheses. So this is how you declare a method. Then we can have void exam as the method for exam. Okay, so this is how we represent a real world object into a computer. So computer के अंदर अगर आपको कोई प्रोग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करना रहेगा, so with this particular program you can represent it, you can save it with the file name as student.java and you can compile it and you can run it. Okay, so it is your choice what you want to do with it. Okay, so yeah, so generally जो आइडिया है कि कोई भी रियल वर्ल्ड को अगर आपको ट्रांसलेट करना होगा तो वो ट्रांसलेट करने के लिए आपके पास जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेथोडोलॉजी। इज दिस पॉइंट क्लियर? Is the point here how to convert a real world into an object oriented programming? Yes, sir. Yeah. So object oriented programming methodology, because it deals with the real world scenario, it has certain features which make them special for the real world scenario. So ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, बिकॉज वो एक रियल वर्ल्ड के लिए प्रोग्रामिंग बनाई गई है तो उसको रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम भी उसको फेस करना पड़ेगा. सो द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम दैट इट फेसेस आर the different features of object oriented programming are, or the most widely one are, the first one is called as a polymorphism, which we'll be discussing today. Okay, so yeah, polymorphism. The second one is called as inheritance, so that we'll be discussing in the third module, I think. Inheritance. Then we have encapsulation. And last one is called as, have anybody noted it down? Yeah, so yeah, fourth one is called as abstraction. So these are the major different major types of features of object oriented programming, most widely used features of object oriented programming, which we'll be discussing in the coming classes. Okay, so today we'll be dealing with polymorphism. So has it been covered in your programming paradigm subject? कहीं पे यूज हुआ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कांसेप्ट्स, कुछ यूज हुए टिल नाउ? पीसीपीएफ में। हाँ हाँ, पीसीपीएफ में यूज किया है आपने? हैव यू यूज्ड दिस कांसेप्ट पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा है आपने? Have you studied this concept in PCPF? सिलेबस में है पर अब तक पढ़ाया नहीं। Okay, so PCPF में कितना कवर हो चुका है? The first module has been covered. PCPF. 2 मॉड्यूल हो गए. Okay, so दोनों मॉड्यूल में अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कांसेप्ट्स को वो नहीं किया गया, एक्सप्लोर नहीं हुआ अभी तक. Have you explored the object oriented concept? Yes. Yes, sir. So polymorphism नहीं हुआ है. हो गए.
Okay. हो गया ना? So what is polymorphism? Can anybody explain what is polymorphism? Many form. Sorry, Different many forms. it is many form. Many Okay, forms of what? Of what? किसकी बात चल रही है? of a single element. Of the okay, fine. So थोड़ा बहुत confusion है शायद. Okay, so the polymorphism that we have is made up of two words. So as you can see, poly means, what is the meaning of poly? It is the biology term that we generally use. What is poly? Many. It is many. Okay, and morphism means morphosis, or in generally the biology student who have taken the subject as biology. So morphism is called as form. Okay, so we have the polymorphism is made up of two words. The one is called as poly means many, and morphism means form. Okay, so this is the meaning of polymorphism is many form. Many form of what? The question is कि किसका many form? So the answer is basically it is the many form of the method that you declare. So a method will have the same name, but the different the functionality that they have can be different functionality. So for example, let's say there is a area करके there is a method. Okay, so this area method, okay, the area method that we have defined, that area method can be used for creating creating or displaying area of a circle. ये area of circle के लिए use कर सकते हो, okay, for displaying or calculating the area of circle. Similarly, area करके एक और function हो सकता है. Okay, there can be another function which by the name of area. Over there we can have area of rectangle. Okay, area of rectangle. So we can have the same name, but the set of functionality between them might be different. Okay, so area करके एक function है जिसका नाम जो rectangle calculate करता है, और area एक और है जिसका नाम area ही है, but वो circle का area calculate करता है. So what is the meaning, or how we can say that whether it is a polymorphism or not? A polymorphism means a function can have many forms. Okay, a function by the name of area, a function by the name of area. So it is a function only which has two forms in this example. The first form is that it will take area, it will calculate the area of a circle. The second one will calculate the area of rectangle. Okay, that is called as a polymorphism. Okay, so polymorphism, this particular point, polymorphism is further classified into two different categories. Okay, इसको दो category में हम classify करते हैं. The first category is called as, does this classification, do you know the classification of polymorphism? What is the classification of polymorphism? Okay, so the first one is called as method overloading. And the last one is called, or the second classification is called as Overriding. Overriding. method overriding. Okay, so we have got two classification. One is called as a method overloading, and the second one is called as a method overriding. ये कवर हुआ है? ये भी हो गया आपका? Yes, Yes, sir. sir. Okay. Yes. So फिर क्यों नहीं बोला आपने कि polymorphism is for method only? So जब यहाँ पे दिख रहा है आपको method, इसका मतलब we are talking about method, right? Right? Sir, याद नहीं आया. Okay. Yes. No issues. So whenever we talk about polymorphism, it deals with method only. Okay, so it deals the multiple forms that we are talking about. That multiple forms is for method. So function की बात की जा रही है, okay? या method की बात की जा रही है, आपके procedure की बात की जा रही है. So so that polymorphism is classified into method overloading, or the second classification is called as method overriding. So what is overloading? What is the meaning of overloading? What is the meaning of overloading? Can someone explain over here? Meaning of overloading? More than one method with same name but different prototype. Yeah. So in method overloading, we can have
we can have a function having same name. We can have the same name, but in order to differentiate between the names, what we can do is that we can have the different set of parameters defined for that. So it is just like मैंने आपको last time भी बताया था, अगर एक class के अंदर there is a possibility कि there can be a person having two person having same name. So there is a possibility of having that situation. Okay. So a person having name as ABC, another person will have a name as ABC. Okay. So in order to differentiate between them, we can have the last name. We can check out their last name also. Okay. So अगर last name में difference होगा, then we can say that there is a difference between the first person and the second person. Similarly, method overloading क्या बोलता है कि function के will have same name. As per polymorphism, function का नाम तो same होगा. But method overloading क्या होगा कि अगर आपको कोई भी दोनों method के बीच में differentiate करना, for example, there is a method in a same program, there is a method by name of area, and in the same program we have got another method by the name of area. So in order to differentiate between this method and this method, what we can do is कैसे identify करेंगे with the help of the number of parameters. So if this area has a parameter called as a, if this area has two parameters called as int a and int b, okay. So अगर मैं future में जब मैं एक let's say इस class का if I make an object, I will be able एक object बनाता हूँ by the name of a1. So because of this object, will I be able to access both the function? क्या मैं दोनों function को use कर सकता हूँ? With using the object, can I call both the function? Yes. So मैं क्या करूँगा? a1 dot area को call करूँगा. So if I write a1 dot area, which function will it call? Which function will it call? It depends on the number of parameters that I'm passing. So let's say अगर मैंने यहाँ पे 5,5 pass किया, so which function will it call? The first one or the second one? Second. Second one, because second has two parameters into it. Okay. Whereas अगर मैंने a1 dot area में सिर्फ और सिर्फ एक ही parameter pass किया होता, in that case the first one or the second one would have been called. पहला या दूसरा कॉल होता अगर सिर्फ एक ही पैरामीटर पास होता. First. So this is called as method overloading. This property is called as method overloading. So what is method overloading? A function will have the same name but different functionality. But in order to differentiate between the function, that differentiation can be achieved with the help of the number of parameters that we are passing. Okay, I'll repeat again. What is polymorphism? Polymorphism means a function having same name but different set of functionality. So is this function, is this what we have defined over here, this area and this area, are they having the same name? Are they having the same name? Yes. Yeah. So a function having same name, but are their functionalities also same? Yeah, different. The functionality of this program, this function, and the functionality of this function, are they both same? Yeah, different. 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 So polymorphism, are they in the, are they can it be considered as a polymorphism? Yes, because the definition of polymorphism is a function having same name but different functionality. So that is the definition of polymorphism. So area करके एक function है, there is another function by the name of area whose functionality is pretty much different from the first one. So it will be considered as a polymorphism. The next thing is we need to define whether it falls under the method overloading category or whether it falls under the method overriding category. Okay, so method overloading में क्या है कि अगर function का जो नाम है और उसके जो पैरामीटर्स है या दो फंक्शन के नाम अगर सेम होंगे, उनको आइडेंटिफाई करने का जो सबसे आसान तरीका है वो तरीका ये है कि दोनों की जो पैरामीटर्स है आप डिफरेंट कर दो. तो दोनों के पैरामीटर्स अगर डिफरेंट होंगे तो आप आराम से एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. ओके, so that is the advantage that you get out of method overloading. Is this point clear? Is method overloading clear to you? Yes, sir. Yeah, so please write down what is polymorphism. Please write down what is polymorphism. So what is the definition of polymorphism? Polymorphism is the property of object-oriented programming. Polymorphism is the property of object-oriented programming. Is the property of object-oriented programming, where a function can have
function can have same name, where a function can have same name. Either you can call it as a function, or what are the alternate names of function? What we can call them apart from function? What we can call them? We can call them as function. We can call them as a method, or slash we can call them as a procedure. So please write down the alternate name also. So जहाँ पे अगर आपको alternate name याद आता है, just put down a slash over there. So आपको याद रहेगा lifelong. Okay. So क्या बोला था मैंने? What was it thing that I said? Polymorphism. Absolutely. Polymorphism is a feature of object-oriented programming where the function has, or function slash method slash procedure has same name, but different set of functionality. So method का नाम तो same होगा, या function का नाम तो same होगा, लेकिन functionality will be different. Okay. The next point, polymorphism can be classified into two categories. Polymorphism can be classified into two categories, which are, or we which are what are the two classification that we have? Method overloading and Method override. method override. Okay, cool. Yeah. So next point is we need to understand what is method overloading. So method overloading का मतलब क्या है? We have seen the example over here. In method overloading, the function will have same name. In method overloading, the function will have same name, but different set of functionality. The function have same name, but different set of functionality. Full stop. The identification of these method. The identification of these method can be done with the help of. The identification of these method can be done with the help of what? On what basis can the identification be done? On what basis? Parameters. On the basis of the parameter. The identification of these method can be done on. The identification of these method can be done on the basis of the parameters passed into it. On the basis of the parameters passed into it. Okay. So another way of differentiating, अगर एक और मैं एक area define कर लेता हूँ over here, and I can have one parameter also, but अगर let's say मैं यहाँ पे float pass करता हूँ, okay, so float, yeah, mind my spelling mistake. So float a अगर मैं pass करता हूँ, okay, and then अगर मैं a1 object create करता हूँ, and if I call a1 dot area, अगर मैं एक ही parameter pass करता हूँ which is 5, तो वो पहले वाले फंक्शन को बुलाएगा. अगर मैं 5.5 पास करता हूँ, so which function will be called? The one with float parameter. So we can, on the basis of the data type of the parameter, we can also do that. On the basis of the count of the parameter, we can also do that. So basically, किस पे होगा? सारा दारोमदार किस पे होगा? On whose basis we'll be able to identify which method are we calling? It will be on the basis of the parameter that we are passing. So it is not just the count of the parameter, but it is also on the data type of the parameter. Okay, so it is all related to parameter only. So अगर आप चाहो एक पैरामीटर पास कर सकते हो, आप चाहो दो पैरामीटर पास कर सकते हो, आप चाहो तीन पैरामीटर पास कर सकते हो, आप चाहो पैरामीटर के अंदर डेटा टाइप के अंदर आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. So on that basis, your respective function can be called out. Is this property clear? Method overloading clear हो गया? Yes, sir. Yes.
The next feature, the second category of polymorphism is called as method overriding. So what is method overriding? Can anybody explain what is overriding? Method overriding. Anybody can explain? Instructions double जितना time run होना चाहिए उससे ज़्यादा time run हो रहा है. Sorry, can you repeat again? Instructions ज़्यादा time run हो रहे हैं जितना time चाहिए उससे ज़्यादा. ऐसा कुछ समझ में नहीं आया. What is जो आप बोल रहे हो उसका सेंस क्या है? मतलब one set of instructions हाँ, एक ही बार run होने चाहिए तो double time run हो रहे हैं. ऐसा नहीं है ना. Anybody has any other guesses? What is method overriding? सब कुछ नाम में है, सब कुछ नाम में है. Everything is in name. Override. What is the meaning? Override. Same method name, same product. Same method name, same parameter. So अगर ऐसा सिचुएशन आ गया कि एक मेथड नाम भी सेम है और पैरामीटर भी सेम है, यानी फ्लोट है तो दूसरा भी फ्लोट है, अगर एक इंट है दूसरा भी इंट है, उस केस में आप क्या करोगे? What you'll do? The first method will override the second one, or the second one will override the previous one, or the new one will override the previous one, or the older one will override the previous one. What will happen? What will happen? New will override the previous one. New one will override the previous one. So that, as it is given in the name itself, the overriding, the name suggests overriding. Override का मतलब उसकी functionality जो है, it has to be rewritten. Okay, यानी जो भी नया वाला function है, that would be considered as a new function, और it will override the functionality which was defined previously. So जो पहले define किया गया था, वो functionality को override कर दिया जाता है. एंड स्पेशली मेथड ओवरराइडिंग के लिए एक स्पेशल कंडीशन है कि इट विल बी यूज्ड ओनली इन द ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस. तो ये इनहेरिटेंस में ही आप अप्लाई कर सकते हो. ओके, सो फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक क्लास है, दैट क्लास नेम इज कॉल्ड एज लेट्स से कार. ओके, कार करके एक क्लास है, या वी कैन आल्सो कॉल इट एज लेट्स से या एक ठीक है, कार भी ठीक है, या लेट्स से कोई पेट है मेरे पास. ओके, पेट है, वो पेट को अगर आप पेट है मेरे पास, एंड देन pet will make there will be a function for pet which is called as pet will make a sound, right? So अगर आप pet जो भी रखना चाहो आप रख सकते हो. You can call it as you can have a cat as a pet. Okay, so we can have a cat as a pet, we can have dog also as a pet. Okay, so दोनों में से कोई एक आप रख सकते हो. So will the cat only make sound, or dog will also make the sound? Both will make sound, right? Yes. Yeah, so a cat will also have the same set of functionality, whereas dog will also have the same set of functionality which is called as sound. But अगर आप यहाँ पे functionality जो आप define करोगे, okay, so that functionality will have the same name. यहाँ पे जो आप functionality define करोगे वो भी same name है, यहाँ पे जो functionality define किया वो भी same name है. Okay, so every functionality will have the same name, same set of parameters. Okay, अगर let's say मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. ओके, इफ आई मेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस डॉग. ओके, डॉग DE इज इक्वल टू न्यू डॉग. ओके, सो किसका ऑब्जेक्ट मैंने बनाया? whose object I have made? which क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बनाया? whose object I have made? I have made the object of dog D. ओके, डॉग का एक ऑब्जेक्ट बना बाय द नेम ऑफ D, और मैं अगर D डॉट साउंड को कॉल करता हूँ, इफ आई कॉल D डॉट साउंड, will it call this method or will it call this method? Which method will it call? There is a confusion, right? Because sound करके जो है वो pet के पास भी एक function है. Okay, because inheritance अगर मैंने apply किया है, after applying the inheritance, ये method भी इसके अंदर आ जाता है. इसके अंदर जितने भी method है वो इसके अंदर आ जाएंगे. So we have got two methods right now in this dog. So I've got a method by the name of sound. Which is pre-defined in the pet method. pet के अंदर वो already defined है. Similarly, dog के अंदर भी मैंने खुद से एक और method लिखा है जिसका नाम sound है. So I've got दो functionality dog के अंदर, जिसका नाम sound और दूसरे का नाम भी sound है, and दोनों के अंदर पैरामीटर भी कोई भी नहीं है. So both are same, both are similar. So if I call D dot sound, which parameter will be called according to you?
The first one or the next one, the previous one or the newer one, which was defined in dog, or the one defined in pet? Any guess? New. New one. So which is the new one? The dog one or the pet one? Dog. Dog. So the specialized one, जो आप जो नीचे लिखते हो, which is called as a subclass. This is called as a subclass. So that is the newer one because you are able to classify them. Okay. So D dot sound का मतलब जो dog के अंदर जो define है, that will be called. Okay. So this functionality is called as method overriding. Okay. What you are able to do is that ये जो sound का जो method है, okay, the method defined in sound is able to override the functionality defined in the pet. Is it clear? Is this point clear? Yes. Yeah. So that is the advantage that you get. So basically overriding क्यों बनाया गया? Let's say अगर मेरे पास एक car का एक class है, there is a class called as car, and there is a method by there is another entity. Okay. Yeah. एक और एक class है जिसका नाम है supercar. Okay. I've got two classes. One is called as a car, and other one is called as a supercar. So car has the properties such as the model number, okay, then chassis number, okay, ये सब इसके कुछ प्रॉपर्टी है. उसके अलावा इसके कुछ फंक्शनैलिटी होगा, जैसे ड्राइव करके फंक्शनैलिटी होगा. ओके, ड्राइव गाड़ी ड्राइव होती है, या इट विल हैव माइलेज एज अनदर प्रॉपर्टी. ओके, प्रॉपर्टी होगी माइलेज. उसके अलावा या सो दीज माइलेज है, मॉडल नंबर है, चेसी नंबर, दीज आर प्रॉपर्टी, एंड द बिहेवियर इज दैट इट विल गेट ड्राइव. ओके, यू कैन यूज इट फॉर ड्राइविंग पर्पसेस. सुपर कार के अंदर भी माइलेज होगा. विल सुपर कार विल हैव आल्सो द माइलेज या नहीं होगा? सुपर कार के अंदर Yes, it will has. उसके अंदर मॉडल नंबर भी होगा, उसके अंदर चेसी नंबर भी होगा, एंड सुपर कार विल आल्सो बी यूज्ड फॉर ड्राइविंग पर्पसेस, या सिर्फ आप शोरूम के लिए या घर में शो ऑफ करने के लिए रखते हैं सुपर कार. यू बेसिकली यूज इट ऑल द फंक्शनैलिटी एज दैट ऑफ कार, राइट? जो कार के अंदर डिफाइन किया था वही यूज करना है आपको. Yes. Yeah. So what I can do is I can make a car as my parent class, and I can make supercar as my subclass. Okay. So car will act as a superclass, whereas the supercar is acting as a subclass. Okay. So abhi main basically, if I make an object of a superclass, so how to make an object of a superclass? How to make it? Supercar C1 is equal to new supercar, right? ऐसे ही बनाते हैं ना हम लोग ऑब्जेक्ट. Yes. या सो अगर मैं सुपरकार C1 इज इक्वल टू न्यू सुपरकार, मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया सुपरकार का, और अगर मैं C1 डॉट माइलेज अगर लिखता हूँ, ओके, C1 डॉट माइलेज, तो अभी मैंने सुपरकार के अंदर कुछ माइलेज ऐड नहीं किया. ओके, सो माइलेज जो यहाँ पे प्रीवियसली था, लेट्स से अगर मैं 30 किलोमीटर पर आवर का अगर मैं माइलेज डालता हूँ, सो अगर मैं C1 डॉट माइलेज को कॉल किया, सो ऑटोमेटिकली जो डिस्प्ले होगा, दैट डिस्प्ले वुड हैपन ऑफ द 30 किलोमीटर, यानी जो प्रीवियस वाला था दैट वुड गेट डिस्प्लेड. मॉडल नंबर प्रीवियस वाला जो था दैट वुड गेट डिस्प्लेड. ड्राइव के अंदर अगर मैंने कोई फंक्शनैलिटी डिफाइन किया, उसको मैंने कॉल किया, तो प्रीवियस वाला विल गेट डिस्प्लेड. ओके, लेट्स से अगर मेरी जो सुपर कार है उसके अंदर मैं चेंज करता हूँ, इफ आई वांट टू ओवरराइड आई कैन डू दैट. ओके, सो ओवरराइड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? आई विल बी कॉलिंग दैट सेम फंक्शन ड्राइव. ओके, उस ड्राइव के अंदर आई विल मेक सर्टेन चेंज इन दैट कोड. तो अगली बार जब मैंने C1 डॉट ड्राइव को कॉल किया, सो ये किसको कॉल करेगा? सुपर कार वाले को या कार वाले को? हु विल इट कॉल? Supercar. Supercar. So that is the advantage that we get. Okay, so the advantage that we get is कि जो भी आपको चेंज करना है in your child you can do that. Okay, it will override the parent की functionality. So parent की functionality आप बड़े आसानी से override कर सकते हो, and the product that you get basically is the newer version. Okay, so for example अगर आप एक और अगर if you play games, so अगर heard about GTA Vice City? Have you heard about GTA Vice City? Yeah, have you heard about the Rockstar games? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So there is a gaming company by the name of Rockstar. There is a gaming company by the name of Ubisoft.
Okay, so there are different types of gaming companies that we have, and the different gaming companies use their different game engines. Okay, so they have their own game engines. So these game engines basically आप एक बार बनाते हो और उस game engine को आप use करके अपने program में थोड़ा थोड़ा change कर करके. Okay, so the open world, the most famous open world games are generally the Rockstar one who makes the famous open world games. So games like we have Bully, we have Red Dead Redemption, we have games like GTA, okay, Grand Theft Auto. Okay, so these are the most widely games. अगर आप गौर से देखोगे इन तीन गेम को, I'm talking about Bully, I'm talking about GTA, I'm talking about Red Dead Redemption, RDR. Okay, so इन तीनों गेम के अंदर अगर आप देखोगे, so every functionality will be similar. उसका कैमरा एंगल, उसका कैरेक्टर का व्यू, हर एक चीज आपको सिमिलर लगेगा. द ओनली डिफरेंस दैट लाइज, जो फर्क है वो सिर्फ कैरेक्टर के क्रिएशन में फर्क है, द एनवायरनमेंट के क्रिएशन में फर्क है. सो दैट कैन बी अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ ओवरराइडिंग फंक्शनैलिटी. सो आप क्या करते हो, जो सेम चीज रखना है वो आप सेम चीज रखते हो, जिसके अंदर आपको चेंज करना है ओनली दैट पार्ट यू विल चेंज इट. ओके, सो इससे एडवांटेज क्या मिलता है? द एडवांटेज दैट यू कैन गेट इज कि आपका जो basically what is the creation of that game will be faster, क्योंकि आपको स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना है. आपको you are designing a very different you are designing a new स्क्रैच से स्टार्ट करने के बजाय आप चाहो तो प्रीवियस वाले जितने भी कोड लिखे आप उसको यूज कर सकते हो. ओके, सो बिकॉज ऑफ दैट इट रिड्यूसेस योर टाइम फॉर क्रिएशन ऑफ अ न्यूअर गेम. सो अगर आपको नया गेम बनाना है, आपके पास ऑलरेडी एक इंजन बनाया है रॉकस्टार की तरफ से, आपको सिर्फ उसको यूज करना है, उसको कॉल करना है, जहाँ पे आपकी फंक्शनैलिटी, जहाँ पे एनवायरनमेंट आपको चेंज करना है, आप उसको यूज करके आप चेंज कर सकते हो. ओके, सो देयर इज अनदर गेम बाय द नेम ऑफ L.A. Noire. ओके, सो इफ यू आर इनटू गेमिंग यू माइट बी नोइंग दिस नेम. सो L.A. Noire जो गेम है, दैट इज बेस्ड ऑन द रॉकस्टार गेम ओनली, बट इट इज नॉट डिजाइन्ड बाय द रॉकस्टार. लेकिन जो इंजन यूज किया वो रॉकस्टार का यूज किया. सो सिमिलरली दैट गेम आल्सो हैज अ सिमिलर फंक्शन वे ऑफ प्लेइंग, या उसका जो सिनेमैटिक रिप्रेजेंटेशन है, इट इज मच मोर सिमिलर टू GTA. ओके, सो यू गेट द सेम फीलिंग इन दैट, but this setting that has been set in L.A. Noire is the 1960s and 70s का era था. Okay, so yeah, that is you get in that particular game. So अभी अगर आपने सुना होगा GTA 5 के बाद GTA 6 आने में it would take around, अभी currently मेरे ख्याल से last it was launched in 2013. GTA 5 was launched in 2013 and we are currently in 2028. It is said कि वो 2023 तक launch होगा. मतलब almost 10 साल लग जाएंगे एक GTA 5 से GTA 6 में. So why it is taking that much of a longer time? Because they are developing their new engine. अभी जो आपको गेम प्ले मिलेगा in GTA 6, which will be altogether different gameplay that you have got in GTA 5. So they are starting the game from scratch, which is why it is taking a longer time. Is the point clear? Yes, sir. Yeah. So method. Anybody has a doubt? No. Yeah. So method overriding जो है आपका, method overriding में क्या होता है? You must have one condition that must be followed in method overriding. That condition is, in method overriding, it generally happens in inheritance. Okay, so that is the condition that you need to follow. It generally happens in inheritance. Okay, so what is inheritance? It is a property where a child inherits the features of the parent. So अगर मेरे पास एक parent class है, okay, there is a parent class and then there is a child class. That child class will inherit the property and features of the parent. So child class के अंदर parent की सारी property आ जाएंगे. जैसे हमने देखा था कार का माइलेज, उसका ड्राइव जो बिहेवियर था वो भी आ गया था, हर कुछ चाइल्ड के पास आ जाएगा, प्लस चाइल्ड के पास खुद की भी फंक्शनैलिटी होगी. ओके, सो व्हाट इज इनहेरिटेंस? इनहेरिटेंस इज द प्रॉपर्टी वेयर a child inherits the features, the properties and behavior of the parent, plus will have its own set of functionality. Okay, so method overriding में it should happen in inheritance only. So उससे क्या होगा, अगर parent के पास कोई functionality है, okay, so parent के पास अगर let's say display करके functionality है, which will display all the information of parent, so child will also have that functionality.
ओके, चाइल्ड विल आल्सो हैव दैट फंक्शनैलिटी। प्लस अगर उसके पास भी खुद का एक फंक्शनैलिटी को अगर अपडेट करना है, उसको चेंज करना है, तो उस फंक्शनैलिटी के अंदर वो चेंज कर देगा। सो व्हेन वी कॉल द डिस्प्ले फंक्शन ऑफ द चाइल्ड, so though it can access the parent की functionality को भी, plus it can access the functionality which has been defined in it, but method overriding will do what? It will override the functionality of the parent, okay, by the functionality of the child. So अगर आप child के अंदर अगर आप display को बुलाते हो, so whichever is the latest one or whichever is been updated of the or the updated version, that version will be called rather than the previous version. Okay, so that is the advantage that you get in method overriding. Is the point clear? Is it clear? Yes, sir. Yeah. So please write down. Yes. Please write down. Method overriding is the property. Method overriding is a property which can be achieved only in inheritance. Method overriding is a property which can only be achieved in inheritance. Which can only be achieved in inheritance. Full stop. The next one. In method overriding, the function slash method slash procedure, the function has same name. The function can have same name but different functionality. The function can have same name but different functionality. Full stop. In this, the parent function, is overridden. In this, the parent function is overridden by the child function. In this, the parent function is overridden by the child function. Okay, so same name है, same different functionality है, इसका मतलब ये polymorphism आ जाता है। लेकिन अगर आप अगर सेम नाम है, सब कुछ सेम है, तो अगर आप जिसको भी कॉल करोगे, so which will get called parent of the child? Who will get called? Child. Why child? Because it overrides the functionality of the parent method. इसको कैसे हटाना है, अगर आपको ओवरराइड नहीं करना है, क्या करना है, दैट विल बी कवरिंग इन द इनहेरिटेंस के अंदर. सो थर्ड मॉड्यूल जब हम स्टार्ट करेंगे, सो विल बी डिस्कसिंग मोर इन डिटेल इन दिस पर्टिकुलर द एग्जांपल और इन दिस पर्टिकुलर आज का जो टॉपिक है दैट इज ऑल रिलेटेड टू मेथड ओवरलोडिंग. सो इस मॉड्यूल के अंदर ज्यादातर हम लोग ओवरलोडिंग पे फोकस करेंगे. नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर विल बी डिस्कसिंग मोर ऑन ओवरराइडिंग. Okay, can we start with the example? Yes, sir. Yeah. So I'll just keep it. I will just start with the program. Okay. So all of you, please open the notepad. So in the notepad, I will be creating, let's say, yeah, I'm creating a class by the name of shape. Okay. So that shape can have functionality such as void area. एरिया करके एक फंक्शनैलिटी बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं सिर्फ एक पैरामीटर पास कर रहा हूँ, which is a. ओके, तो ये एक से लेके मुझे कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ सर्कल. सो लेट्स से मैं सर्कल करके एक पैरामीटर बना रहा हूँ, वेरिएबल बना रहा हूँ. तो वेरिएबल सर्कल करके या सर्कल एरिया करके एक वेरिएबल बना रहा हूँ. सो मेक इट एज फ्लोट या डबल कर लो, ज्यादा सेफर रहेगा. डबल सर्कल okay area. So there is
a variable by name of double circle area, and in order to calculate this circle area, the formula is 3.14 multiplied by what we'll have to multiply in it, pi r square. The formula is pi r square, right? So 3.14 into what we need to pass R in. into R. A into A. R यहाँ पे क्या है? What is R over here? A A into into A. So it will be A into A. So we are passing A into A. Okay. So we have calculated that value. Now we just need to display it. So display करने के लिए system dot out dot print ln, and we'll just write down a message over here. The area of the circle is, and I will call that particular variable. So yeah, so variable का नाम है circle underscore area. Okay, then I will save. हाँ, तो एक function मैंने ये लिख लिया. I will just copy this function. Okay, मैं यहाँ पे आके एक और function बना देता हूँ with the same name. So void area, but in this case I will pass in another parameter which is called as int b. Okay, so now assuming this is for rectangle, so rectangle के अंदर I'll be using int rect area. So rectangle of area का formula क्या होगा? What will be the formula of rectangle area? A into B. So it will be A into B, because A can be considered as a length and B can be considered as a breadth, and both I will multiply it in order to generate the rectangle area. So the area, I just need to print it. So system.println, the area of rectangle is. So I'll just remove this part. Is rect area. Okay, so I've removed it. I've defined two set of functionality. उसके बाद I'll create my main function. So how to create main function? Tell me fast. How to write main function? Public. Public static Static void main. Void void main. main. String there. In bracket we pass parameter by the name of string args. Can I write just A rather than args? No sir. No sir. सर हाँ, हम लोग जो अभी ये रेक्टेंगुलर ब्रैकेट जो लिखते हैं हम लोग ए के बाद मतलब स्ट्रिंग के बाद भी लगा सकते हैं. रेक्टेंगल क्या बोल रहे हो? ये जो हम लोग यहाँ पे एक जो ब्रैकेट लगाया है ना अपने ए के बाद एरे के हाँ, साथ एरे हाँ, के हाँ. हम लोग स्ट्रिंग के बाद भी लगा सकते हैं. हाँ, लगा उसका क्या सकते हैं. या बट उसका मीनिंग क्या रहेगा सर? Meaning उसका कुछ नहीं है. It is just a syntax. Okay, so it is a way. So either you can do that or you can do this. So there are two ways of displaying array. When we'll be discussing about array, so we'll be covering that part. आप अगर आप चाहो तो bracket पहले ले लो, या अगर आप चाहो bracket बाद में ले लो, कोई problem नहीं है. So it is just a way of writing. So it is just like जैसे letter में आपको बोला जाता है ना कि left indentation आप follow करो या right में आप रखो. So it depends on that कि किस syntax को आप follow करते हो. But both are considered. Okay. ओके सर. Yeah. So we'll not write args. We'll just write down a and we'll check whether आपका program run होता है कि नहीं. Okay. So yeah, public static void main function आपने define किया. Main function के अंदर आपको क्या करना है? आपको area में से दोनों method को आपको use करना है. So उसके लिए use करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? Shape का object बनाना पड़ेगा, right? So shape s is equal to new shape. Okay. उसके बाद इसको मैं सेव कर नहीं, हाँ, अब मैं s से कॉल करता हूँ. सो आई विल बी कॉलिंग s एरिया. ओके, अगर आप चाहो तो स्कैनर यहाँ पे डाल दो चाहिए तो, सो दैट वी कैन कॉल इट, या नहीं चाहिए आप अपने हिसाब से लिख लेना बाद में प्रोग्राम. सो s डॉट एरिया and I'll ask user to please pass my the length or the breadth, so user pass करेगा. So I'll directly put the values over here. Okay, so I think you might know it कि कैसे करना है. So if I pass 10 comma let's say 10 या हाँ 10 comma 10 या 10 comma 5 pass करता हूँ. So which function will I call? Will be the first one or the second one?
Second one. So it will be calling the function which has two parameters, which is the second one, and what will be calculate? Circle का area आएगा या rectangle का आएगा? Rectangle. So we'll just try to save the program. Save करके कोशिश करते हैं इसको save करने की. Shape Java. Okay, so I'll just try to open the run window. Open the command prompt. So मैंने command prompt open कर लिया. Yeah, I will go to D drive. D drive में जाने के बाद go into the Java program. Compile. Run. Shape. Sorry. Java shape.java. Okay, so it has been compiled. Okay, and then I will run it. So Java shift. What will be the output? Any guess? Rectangle का आएगा कि circle या rectangle दोनों का आएगा या circle का आएगा? What will be the output? Just look at over here. Output में क्या आएगा? Area of rectangle या area of rectangle? area of rectangle. So I will just run it, and the output is the area of rectangle is 50. Okay. अगर मैं यहाँ पे s dot area and if I call let's say 5, so in this case पहले area of rectangle आएगा, फिर area of circle आएगा, या circle आएगा, फिर rectangle आएगा, या फिर सिर्फ circle आएगा. What will happen? पहले rectangle आएगा फिर circle आएगा. Okay, so I'll just save it. I will try to compile it. It has been compiled. I will run it. So area of rectangle आया, फिर circle आया. Is the example clear to you? Yes. Yeah. So this is called as method Yes. overloading, not overriding, because function is there. No function is overriding the other functionality. Both are there. और अगर दोनों में आइडेंटिफिकेशन अगर आपको करना है, it is on the basis of the parameter that you are passing. अगर आप दो पास कर रहे हो तो आप दूसरे वाले को बुला रहे हो, अगर आप एक पास कर रहे हो तो आप पहले वाले को बुला रहे हो. Is this point clear? Yes, sir. Yeah. Okay. So I will just stop the recording. We'll look into this in